हेलो। 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 हाँ बोलो सर। Hello guys. Hello, sir. Sorry for the delay. Hello, sir. Yes. So, बहुत वेट किया कि कौन कौन सो गया? जगह हो ना सब? Yes, sir. ये नींद है तो बता देना यार। नो सर, अभी तो नहीं आ रहा। जो सो भी गए थे ना, तो प्रोजेक्ट के लिस्ट देख कर आई थिंक उनकी नींद उड़ गई होगी। Okay. So basically, okay, cool. Yeah. So ठीक है. So I'm going to share my screen. तो प्रोजेक्ट लिस्ट आप लोगों को मिल गया है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So do practice बनाओ, कुछ कुछ बनाओ, बनाती रहो. Yes, sir. ठीक है.
So my screen is visible. Yes, sir. Okay. So basically, what we are going to do, yeah. So in previous lecture, we have discussed about what Redux and try to integrate our Redux with React, right? Yes, sir. Okay. So what we have done so far is that we have a three components. It means three components are what? A cake container, ice cream container, and a user container, right? Okay. So basically we have a three components and we want to what? We want to manage their state with what? A Redux store. A Redux store. So if I'm going to open a notepad, yeah, it is visible. Okay. So Sir, what zoom we करिए. okay, ये छोटा वाला है ना. Now visible. Yes, sir. So basically in Redux, we have three things, which is what? Actions, reducers, and what? A store. Stores. These three things are what? We have three things in our Redux. So Redux have uh, these three things are users and a store. Okay. So what it means, where's our notepad? Yes. So this is our Redux and we have our actions, reducers and store. And with our example, we understand that we have a what? Shopkeeper, customer, and what? What? Mediator, sir. No, not a mediators. Shopkeeper, customer, and something like a store, right? So actions are what? In Redux, we have only three things which we have to manage. First is actions, second is reduces, and third is store. So here in action, it means what? Customer, or what it means? What he wants to do, or something he wants to do, like he wants to buy some ice cream, buy some cake. So actions are what? A customer. Reducers are what? A shopkeeper. We understand it, like shopkeeper. And store is what? A shop. So for these things, if I'm going to integrate a Redux with React, हेलो, लगता है सर ऑफलाइन हो गया फिर से. किसी को सर की स्क्रीन दिख रही है? No, no. I think no network issue है. हाँ, मुझे भी लग रहा है. Same here. लग नहीं रहा आज क्लास हो भी पाएगी. ऑलमोस्ट 9 o'clock तो हो चुके हैं. हम तो बोल रहे हैं कि सर छुट्टी बोल देंगे, आज छुट्टी हो गई बस. नहीं, कोई इशू नहीं है, मतलब 9 o'clock हो गए तो मे बी 10:30 तक ले सकते हैं, या 11 तक, कोई वो इशू तो नहीं है. होता.
Yeah, my screen is visible. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we are going to like integrate our actions, a reducer, or store in what? With React. So going to integrate a React Redux, and apart from that, we are also going to integrate one of our middleware, which is what? Redux Hub. Nice. Okay, what the example is what? We have a cake in a shop, ice cream, and what? And ice cream in a shop. So we are going to integrate this cake and ice cream and integrate what going to handle their state with what? A Redux store. So this cake and ice cream. Apart from that, I'm going to give one a demo for what? API integration. API integration using what? Redux. So when we are talking about API integration, what first thing is coming in our mind is what? A Redux Hunk or something like Redux Saga. You can integrate any of them, Redux Hunk or Redux Saga. Redux Saga. Both are what? Both are middleware of Redux. Nice. So what we are going to do, we are going to integrate this Redux Thunk, Redux in our React application and manage their state with reducers. Apart from that, we are going to integrate a Redux Thunk to handle what? API. So we are going to manage a list of users, and going to save these users inside what? Inside our Redux store. Nice. So yeah. Okay. So basically, in previous lecture, we okay, why our terminal is not doing anything? Okay, I'm going to open my CMD. Let's enter. Sir, you are muted, I think. गाइस मैं म्यूट था उतने टाइम से. Yes, sir. Yes, sir. भैया मुझे लगा मेरा इंटरनेट चला गया. सर हमें तो यूं लगा कि पता नहीं क्या हो गया.
अरे भाई साहब यार कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब मैं सर बोल मैं रहा यही था तो देख रहे थे। यार, मैं किसको देख के बोल रहा था। चलो ठीक है सर बस आप बोले यार, तो कोई सुन ही नहीं रहा था आपकी। भैया, सोना नहीं सब यार, चलो ठीक है। So basically what I have told yet is that we inside this is our first component which is going to be render. This is our first React component which is going to be render, right? And inside this app we have a three components: a cake container, ice cream container, and a user container. I have only made make a what a boilerplate code here. This is a cake container, this is a ice cream container, and this is a user container. And this is going to be rendered inside what? This app. Clear? Yes, sir. Nice. So now this is a Redux. Inside this Redux, I have a four things. What is this? This is the action creators, action types, reducers, and store. Nice. But before doing that, I'm going to make another inside this Redux. I'm going to handle for like for a cake state. I'm going to make what? A cake folder, and inside the cake folder, we have a action creators, action type, reducers, and the store. It totally depends on you what you are going to prefer, but this is also not a bad approach. This is also a good approach where all the action creators inside this action creator file, action types are inside this action types, reducers are empty because we haven't made any reducer yet. Store is empty. So just to start with action creators. So what is action creators? Action creator is a what? Action creator is what? Action creator is a function that returns a certain action. यही होता है ना? Action creator क्या होता है? Action creator is something which returns actions, and this is your action types, and this is your action creators. So here inside the action creator, we have a three actions creator. First is cake, ice cream, and user actions. So this is what action creator is, a function that returns an action. So what is this? This is a function and it returns what? What? This is what? A action Action. and action. Nice. So our action creators are ready. Our action types, which means what? A action, this is your action. एक्शन क्रिएटर रिटर्न्स व्हाट? दिस एक्शन. आप इसको थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एक एक्शन है, बट ये एक बॉयलर प्लेट का एक लिखने का वे होता है. सो दैट इज व्हाई एक्शन क्रिएटर्स के अंदर कुछ ऐसा लिख रहा है. तो एक्शन क्रिएटर क्या रिटर्न करता है? दिस एक्शन टाइप्स. और वी हैव ओनली फोर थिंग्स व्हिच वी हैव टू मैनेज: एक्शन क्रिएटर्स, एक्शन टाइप्स, रिड्यूसर्स एंड स्टोर. if you understand these four things, then Redux is just a what? Just a simple concept which you are going to integrate in each and every project and handle their state with a simple global store. Okay, so this is your action creators that returns an action. So here inside your action we have a three thing. First is what? A buy cake, and second is what? Ice cream, and third is what? This is for what? This is for what? API handling for what? और आप ऐसे लिख सकते हो, these are actions for handling what? Handling to get user list API. और आप ये भी लिख सकते हैं for integrating what? User list API. ठीक है ना? ठीक है. तो हमारे एक्शन टाइप्स भी रेडी हैं. Now we have a reducers and what we are going to do, and we have a store which we are going to handle. Okay. So I'm going to make a reducer here. And what is this reducer? So first reducer is what? First reducer is what? Cake reducer dot js. Okay, so let's start.
we are going to make all the things like action creators are ready. Inside this action creators, this is a by cake which returns an action. This is your what? Action types, which is what? A simple actions. And now we are going to make a reducer. So inside this reducer, first thing what we have to do, first thing we have to import what? Action. Action is what? This action type. So I'm going to import this by cake and importing by cake from what? From this folder. So this is basically we have to import from action types. Okay. And in reducer, what we have to do? Two things we have to do. First is what? Initializing our state, right? First यही करते हो ना, तो आप क्या करोगे? Const initial state is equals to an object, and inside this object, what we have? Number of cakes. And number of cakes is what? आप जितना रख दो, आपने रख दिया 10, ठीक है? So initially in store we have about 10 number of cakes, right? अब देखो, अगर ये स्टेट आप मैनेज करते इस कंपोनेंट से, केक कंटेनर से, समथिंग लाइक विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट कर सकते थे ना, ऐसा करते आप नंबर ऑफ केक्स, एंड फिर क्या करते हैं? सेट Number of cakes. number of cakes, and you are going to define a use state, and inside this use state आप initially क्या कर देते? 10 रख देते. But this state is, अगर आप यहाँ console.log number of cakes करते तो initially what it gives? It gives you 10, right? But this state is only present for that component. You can't populate this state to any component. Instead of, if you are using a props or something like callback function, then you can easily populate this data. But if the complexity of the components are complex, something like if you have a 10,000 of components or 100 of components, then passing a prop or a callback function is not a good idea. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. That's why we are going to handle every component's state. If it is required for different another component, then we are going to handle with store. देखो, store redux use करने का दो ही, ये नहीं होता है कि redux use कर लिए, बस देख लिए redux use कर लिए. redux use करने के सिंपल दो फंडे हैं. फर्स्ट है कि आपके पास components हैं, आपके पास components हैं. If you have a components, then it must have some state. समझ लेना, ये दो पॉइंट समझ लोगे ना तो रिडक्स यूज करना आ जाएगा कि where you are going to implement redux, or where it is important to implement redux, or where it is not important. So you can easily understand these things. So basically what a components, what I have discussed, like okay, so components have what? Sorry, it must have state. So if the passing a data to a different component is a complex, something like you have to pass from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 with the help of prop. Prop क्या करता है? पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डेटा फ्लो कराता है, यही कराता है ना? तो yes, अगर ये कॉम्प्लेक्स है, मान लो कि एक ऊपर वाले कंपोनेंट से नीचे वाले कंपोनेंट को डेटा पहुंचाना है और आपको बार बार वो प्रॉप्स पास करना पड़ रहा है, तो इट इज लिटिल बिट वियर्ड, राइट? फॉर दैट थिंग we are going to handle that state with what? A store. अगर वो स्टेट नॉर्मल एक कंपोनेंट से सिर्फ अपने नीचे वाले कंपोनेंट तक डेटा लेके जा रहा है, सिर्फ वही जरूरत है, तो उसके लिए आपको वो स्टेट स्टोर से हैंडल नहीं करना है. समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? yes, sir. मान लो कि आपके if your component have 5 states and 2 states are something like that, कि it is just passing from component B to their child component, which is a component C, right? Then
आपको वो डेटा, वो स्टेट आपको स्टोर से मैनेज करने की जरूरत नहीं है. Only those students, those states are handled with the store, which is just populated from a 5 to 10 or 15 components, or something like complex architecture has been followed. If the complex architecture has been followed, then you must have to use what? State. Redux store. Right. So this is our initial state. And now the second thing is what? A reducer. So I'm going to make a const cake reducer which take two arguments. First argument is what? A state, and initially it takes the initial state. So this is your initial state. And second is what? An action. And now this is an arrow function. And inside this arrow function, we have what? A switch case. A switch case. And it receives what? This Action dot. action. So this is your what? An action. Sorry. You can say something like action dot type. And inside this action dot type, what we have? A different case. So first case is what? We have only one case here. What action we have? We are going to dispatch a buy cake action. So we are going to manage only this buy cake. So this buy cake action returns something. So return, return, and what it returns? It returns a previous state, and this is what? A spread operator, which returns what? Whatever the initial state is, and then it is going to modify what? This number of cakes. So now the number of cakes is what? State, initial state dot number of cakes minus 1. Nice. And this is the first case. If you are writing a switch case, then you must have to define a default state. And in default, it returns what? It returns a normal previous state. अगर ये एक्शन होगा नहीं तो ये पुराना, अगर आप ये एक्शन डिस्पैच करोगे ही नहीं तो क्या होगा? वो आपको प्रीवियस स्टेट जो इनिशियल स्टेट है वो आपको दे देगा. नाइस. नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दिस, export default cake reducer. सॉरी, ठीक है. अब आपका रिड्यूसर क्या है? रेडी है. नाउ व्हाट हमारा क्या हो गया? रिडक्स के अंदर एक्शन क्रिएटर्स डिफाइन हो गया, एक्शन टाइप्स डिफाइन हो गया, रिड्यूसर्स डिफाइन हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू व्हाट? हैंडल अ स्टोर. सो दिस इज स्टोर डॉट जीएस. कहाँ कुछ बचा है, सेव नहीं हुआ है कुछ. Okay. So inside this store.js, I'm going to make a instance of our store. So basically we have installed two packages with what? npm I redux and what? React redux. We have already installed this React and Redux and React Redux package. So what we are going to do, I'm going to simply import a create store function from what? Redux. Nice. Because it is deprecated like the Redux, ये कटा हुआ इसलिए आता है because what happens, Redux gives you another thing which is what? A Redux toolkit, which gives you something you have to import. Instead of importing create store, you have to import a configure store from a redux.js/toolkit. So ये भी work करता है, don't worry. So second is what we have to import in our store? Reducer. So cake reduce, okay. Cake reducer from what? From कहाँ है?
ये स्टोर के बाहर है, ये रिड्यूसर के अंदर है, और दिस इज योर केक reducers. Now I'm going to create an instance of a Redux. So this is our store, and what we have to do, create store, and we have to simply pass what? This cake reducer. Nice. So our store is declared, but value is not used. Okay. So it means what? We have to export this store. So export default store. ठीक है, तो हमने क्या किया, अपना स्टोर क्रिएट कर लिया. What we have to simply we have to pass our reducer inside what? A store. Nice. So these four things has been integrated in our what? React application. It means we have implemented a Redux inside our React application. But only one thing which we have to implement is that inside your parent component, basically you have to provide that store which we have made. Like जो तुमने स्टोर क्रिएट करा है, ये अपने एप्लीकेशन को तो दोगे ना. एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि आपने स्टोर बनाया है और आप स्टोर से अपने डेटा को हैंडल, अपनी स्टेट को हैंडल करने जा रहे हो. So how can you do that? So for that things we have simply inside your parent component, what you have to do, you have to import one thing which is called provider from React Redux. Basically we have installed two packages. First is what? A Redux. So Redux helps you to create an instance of the store, and for connection purposes, like for connecting that store to a React application, we have to import a provider from what? This React Redux package. अरे समझ पा रहे हो सब? Now, Yes, sir. Yes, sir. what you are going to do, app returns a div element, but before this div, you have to provide this provider. And what it provider does, it provides a store to a React application. Okay, so now your provider is ready, but you have to wrap the entire React application with what? This provider. अब देखो, this is your first component which is going to be rendered. This is the first React component which is going to render, and this is called what? A parent component. So what you have done here, you wrap your entire application with what? This provider, and pass this store, so every component have access of that what? A store. But here Store. there's one problem. Store is not defined. So for what we have to do, we have to import that store. So I'm going to import this store from what? So basically we are going to, okay, this is the first file component. So single dot slash, and now inside this Redux, what we have? A store. So okay, yeah, now it is done. अब ये लोगो हम यूज कर ही नहीं रहे, तो हम इस लोगो को हटा देते हैं. ठीक है. सो वी हैव प्रोवाइडेड आवर स्टोर. ओके, सो अब यहां तक तो हमारा क्लियर है कि चीजें हमारी हो गई. अब आपने अपने स्टोर को क्रिएट भी कर लिया, आपने अपने स्टोर को क्रिएट कर लिया, उसके बाद क्या कर लिया है? ओके, आपने एक्शंस डिफाइन कर लिया, रिड्यूसर्स डिफाइन कर लिया, स्टोर डिफाइन कर लिया, एंड आफ्टर दैट रिएक्ट रिडक्स इंटीग्रेट भी कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया. ठीक है. व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट? कोई बताएगा मुझे? कोई आइडिया? रिएक्ट थंग नहीं, अभी तो इंटीग्रेट करे हो ना, ये स्टेट कैसे कंपोनेंट को मिलेगा, ये तो बड़ा क्वेश्चन है ना कि भैया आप कैसे कंपोनेंट्स इसको कनेक्ट करोगे. दिस इज द फर्स्ट
important thing now. So what we have to do here, now we are going to अब बहुत अच्छे से समझना, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. अब आपने रेडक्स तो बना लिया, अपना स्टोर भी क्रिएट कर लिया, आप कुछ कर लिया. अब क्या चाहिए आपको कि अपने कंपोनेंट को कनेक्ट करना किससे, उस रेडक्स से जहां से आप डेटा पॉपुलेट कर पाओ. समथिंग लाइक आई एम गोइंग टू go inside our cake container. This is our first component, and now here I'm going to return something which is what a number of h2 number of cakes. ये चाहिए ना रेडक्स स्टोर से तुम्हें नंबर ऑफ केक्स, नहीं चाहिए सर चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए. ओके, एंड आई ऑल्सो वांट कि जब मैं बाई केक का एक बटन हो, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूं, व्हाट टू बाई अ केक, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो नंबर ऑफ केक्स क्या हो, स्टोर में कम हो जाए और जो बचे हैं वही दिखे. मतलब अब जितने बचे हैं, नंबर ऑफ केक्स जितने बचे हैं, वो रिमेनिंग जितने भी केक्स बचे हैं आपके स्टोर में, वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो. तभी तो समझ पाओगे ना कि भाई स्टोर कैसे काम कर रहा है. अभी तो कुछ भी बना दो, मैं तो यहाँ पे बेवकूफ भी बना दूं तुम्हें कि भैया सब कुछ हो गया है ना. तो अब क्या करना है, इस पे नंबर ऑफ केक्स हमें कहाँ से लाना है, स्टोर से लाना है. और दूसरा ये करना है, यहाँ दो चीजें हैं. एक क्या है, आपको स्टोर से स्टेट को लाना है, गेटिंग स्टेट फ्रॉम व्हाट, अ स्टोर. एंड सेकंड इज व्हाट एक्शन, a dispatching an action to reduce a number of cakes from a store. ये दो काम करना है ना, कि आप क्या करोगे, जब आप केक पे क्लिक कर रहे हो इस बटन पे, तो केक का काउंट कम हो रहा है. इट मींस व्हाट, कि यू आर अ कस्टमर. यू आर व्हाट अ कस्टमर. सो कस्टमर, व्हाट कस्टमर डू, कस्टमर dispatches an action. Customer dispatches an action. So what two things we have to do here? First is what? Dispatching an action from any component, right? And second thing is what? Fetching the data from store. These two things which we have to do. Okay, so first thing what we are going to do, we are going to dispatching an action. So for dispatching an action, what we have, there are two ways to do that. First is with this is the older approach, but फिर भी जानना जरूरी है. This is important for interviews. Like for older approach is what? We have one function from a Redux, which is what? Map dispatch DIPAT say dispatch to props. This is the function which helps you dispatching an action from any component to our Redux store, right? And second thing is what? Second thing is a hook called use dispatch, which handles to dispatching an action to a store. So I'm not going to follow the first approach, map dispatch to props. It is little bit complex and little bit weird syntax. So I'm not going to do with the first approach. आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, पढ़ना देखना मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स क्या है. But I'm going to do with a second one. Use dispatch. A use dispatch is what? A simple hook, something like
यूज स्टेट, यूज इफेक्ट हमने डिस्कस करा है ना, यूज स्टेट हुक, यूज Yes, इफेक्ट sir. हुक। तो ऐसी यूज डिस्पैच एक हुक है जो फंक्शनल कंपोनेंट में हुक्स के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था, जो बहुत ही इजी कर देता है तुम्हारे एक्शन को डिस्पैच करने में। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, समथिंग लाइक, जब आप स्टेट यूज स्टेट करते थे तो क्या करते थे, यहाँ पे आप यूज स्टेट को इंपोर्ट करते थे, है ना, राइट? Yes. Yes, sir. I'm going to import what? Use Dispatch. dispatch. Thanks. So for using this use dispatch hook in any component, what you have to do, you have to initialize a constant with what? Dispatch, and this is use dispatch hook. Now you have imported this dispatch. So if you are doing console, okay, I'm not starting our server yet. So I think I have to start my server. npm start. So there's nothing in our application, but only I have to show a dispatch console inside a browser. Nice. अरे आज से तो will be start हो गया. Okay, there are a lot of issues. Can't resolve React Redux. Okay. ठीक है. Redux. Store. What it means? Go inside what? Package.json, and inside our package.json, okay, I have not installed what? These two packages. First is what? React Redux and Redux. So I'm going to install these two packages. So where is our terminal? So this is our terminal. I'm going to just close my server because after installing, we have to run the server again. So I'm going to install a Redux package. So npm I Redux and what? React Redux. So it takes some time. Okay, it takes some time, yeah. उसको टर्मिनल में भी कर सकते थे ना कि नहीं? हेलो, Sorry, yes. Yeah. हाँ इसको टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते थे ना? मेरे में टर्मिनल ओपन नहीं हो रहा है यार, दैट्स व्हाई मैंने पार्सल खोला है बाहर, पता नहीं क्या इशू। ओके, सो मैंने इंस्टॉल कर लिया, वहीं पे वही डायरेक्टरी देखो ना, सेम डायरेक्टरी है ना, रिएक्ट रिडक्स एप्लीकेशन 1, उसी डायरेक्टरी में मैंने इंस्टॉल किया। तो आप कहीं से करो, it makes not sense any. Okay, so what we have to do next, we have to start again our server. Okay, now yes, it takes some time. Okay, there are a lot of another issues are coming. Use dispatch is not a function. What it means? Use dispatch is not a function. So what it not makes any sense. React use dispatch. Okay. Use dispatch is not a this type errors means means something weird. I'm delete the node modules folder and reinstall.
Okay, he's suggesting we have to delete our node modules. So, okay, I'm going to close the application. हेलो 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 हाँ भाई आवाज आ रही है मेरी। अरे क्लास चल रहा है ना, वही बोला किसी का आवाज नहीं। क्लास चल रहा है सर, पता नहीं बाय मिस्टेक लेफ्ट हो बस गई या चल ही कुछ। जाएगा। हाँ वही सब प्रोग्रेस के लिए। मुझे ऐसा लगता है सर को बोल देना चाहिए यार, छुट्टी ले लो यार, नींद भी आ रही है। और एरर भी खत्म नहीं हो रहे। हुई क्या सबकी क्या बोल रहे हो? अटेंडेंस मार्क हो गई? हाँ सबकी होती नहीं 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 हाँ हाँ, अटेंडेंस हो गई। अरे नहीं यार यार, हम थोड़ा सा फंस गए थे अभी बीच क्लास में, तो इस वजह से हम अब म्यूट सो कर सैड, दिए आपको थे। लग नहीं पाएगा अटेंडेंस कैसे भी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अभी है नहीं यार, माशा, बढ़िया मजाक बढ़िया। कर रहे हैं, अभी मजाक कर रहे हैं यार आपसे। तुम लोग असाइनमेंट पूरे हो गए वो मतलब रिएक्ट भाई बुक स्टोर वाला? नहीं भाई, आज लिस्ट रिएक्ट आ अभी गई, बुक तो स्टोर आज लिस्ट वीडियो आ देख गई के ना। ही समझ रहे हैं। नहीं लिस्ट आ आज गई लिस्ट आ मतलब? गई असाइनमेंट्स के यार सब लिए। लोग ने प्रोजेक्ट सबमिशन जितना के सर लिए ने डेट आ पढ़ाया। गई ना अब। प्रोजेक्ट कितनी सबमिशन हाँ डेट क्या? वाला, है? मतलब सबके अलग अलग है, सारे प्रोजेक्ट्स के अलग अलग है। एक बार आप मतलब जिस ग्रुप में लिंक आता है ना क्लास का, उस ग्रुप में आया है तो आप चेक कर लेना एक बार। ओके अरे बाप रे, ठीक है चेक करके। चलो उसको हम चेकआउट करते हैं। Okay, screen is visible here. यस सर। सर So we have started our server. Okay, हो सकता है रिडक्स यार यूज दिस फ्लैश ये ले नहीं रहा। ओके कोई बात नहीं। इट मीन्स बट
अच्छा अच्छा अच्छा, ओके मैं समझ गया क्या इशू है. We have to dispatch some actions from that. Maybe I'm wrong. Where's our cake actions? Sorry. Components. Cake container. I'm going to console this. Console.log. Dispatch. And this. Okay. Let's see what happens. Inspect. ओके ये लिया ही नहीं है क्या? ओके आई कैन डू वन थिंग. मैं ये हटा ही देता हूँ और यहाँ यूज कर लेता हूँ react dot use dispatch. It may work. Okay. Again, simple thing. Give me a second here. Desktop. अरे यार बहुत गंदा मिस्टेक कर रहा था मैं. एक्चुअली यूज डिस्पैच रिएक्ट नहीं देता है, ये रिएक्ट का पैकेज नहीं है. सॉरी गाइस. It basically gives you a redux. So this is a dispatch and now it works. Yeah, it works. Just close my code. Yeah, now it works. So sorry yaar, it's my fault. मैं मिस कर गया था कि use dispatch हम. So our component is ready. Now what next we have to do? When I click on buy now or when I refresh this page, a dispatch, a redux action is coming. A dispatch, this is a what? A function. So now we are dispatching our action from here. So what next we have to do? We have to import what? Dispatching an action, what we have to do? We have to importing an action. So what we can do here? आपको actions को क्या करना है? Import करना है. तो actions को कौन return करता है? तुम्हारे action creators. So I'm going to import this buy kick action creator, which return what? This buy kick action. So inside this, I'm going to import a buy kick from what? From what? Redux action creators and cake actions. Nice. So now your buy cake is ready and now you are going to dispatch an action. So I'm going to give one on-click event handler, and inside this event handler, I'm going to make a function which is handle dispatch. Handle dispatch. So what we have to do, I'm going to remove this console and I'm going to create this function
and inside this person, what we have to do, we have to dispatching an action. Okay, so I'm going to dispatch an action. An action is what? This by के क्या है? एक फंक्शन ही तो है जो एक्शन रिटर्न करता है. So I have to dispatch this action with that. That's way. That is so simple. कितना आसान है डिस्पैच करना. ये पहले वाले अप्रोच में बहुत कॉम्प्लेक्स था. अब क्या होगा, जब भी आप बटन पे क्लिक करोगे एक एक्शन डिस्पैच होगा. इट मींस व्हाट? एक कस्टमर दुकान पे जाएगा किसके लिए? गाइस, केक के लिए. अब देखते हैं. लेट मी चेक. ओके, सो अब हमें चेक करने के लिए एक्शन डिस्पैच हुआ है कि नहीं हुआ है, हमें क्या करना पड़ेगा? स्टोर से अब अपडेटेड स्टेट भी तो लाना पड़ेगा ना. यस सर. तो इसके लिए वी हैव अ सेकंड हुक विच इज कॉल्ड यूज सेलेक्टर. ओके, what is use selector? So now I'm going to use const selector जो आपके होते हैं. const आप कर सकते हो state या what number of, या आप सिंपल रख लो ना, number of, नहीं अलग ही रखो, use dispatch and यहाँ मैं कर देता हूँ cakes. Cakes is equals to what? This huge selector, and inside this huge selector, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? A hook to access the Redux store state. This hook takes a selector function as an argument. The selector is called with the store state. This hook takes an optional equality comparison function as to second parameter that allows you to customize the way to you to select the state. इसका कोई भी मतलब नहीं है. अभी ये समझ लो ये क्या होता है. ये एक hook है. आपसे पूछा भी जा सकता है कि what is a use selector hook inside a Redux. So Redux, a hook to access a Redux stored state is called a use selector hook. So now what you are going to do here, you are going to get a state from what? That selector. अब देखो आपका स्टेट क्या है. आप अपने रिड्यूसर में हो. दिस इज योर रिड्यूसर. तो हमें इसी का स्टेट चाहिए ना. समझ पा रहे हो सब? यस सर. तो अब देखो, अब मैं कैसे इसको गेट करूंगा. इसके लिए हमारे पास है स्टोर के अंदर स्टेट, and you can simply do what? State dot what state dot number of cakes. अब देखो रिड्यूसर के पास क्या है? स्टेट है. तो मैंने यूज सेलेक्टर से क्या निकाला है? स्टेट निकाला है. तो दिस स्टेट, अब ये स्टेट के बाद क्या है? उस स्टेट के अंदर क्या इनिशियल स्टेट है ना. यही तो स्टेट है जो अपनी कॉपी किया. अब यहाँ पे मैं कुछ और नेम दे देता तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ता, वही नेम मुझे यहाँ भी देना पड़ता. समझ पा रहे मेरी बात को? तो स्टेट डॉट, स्टेट मीन्स व्हाट? दिस इनिशियल स्टेट. तो इनिशियल स्टेट डॉट व्हाट? दिस नंबर ऑफ केक्स. Now you going to do console.log what cakes देखो कि डेटा गेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है. यस, आपके स्टोर से इनिशियल स्टेट ये गेट कर पा रहा है. सो व्हाट यू सेलेक्टेड डू, इट टेक्स अ स्टेट एज एन आर्गुमेंट एंड यू कैन गेट द स्टेट वट एवर इट इज. लाइक अभी आपके पास जो इनिशियल स्टेट है उसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ केक्स है, राइट? तो स्टेट डॉट नंबर ऑफ केक्स. अगर दूसरा कोई स्टेट लेना होता तो हमें दूसरे कीज के साथ गेट करना पड़ता. चलो वो हम आगे देखेंगे आइसक्रीम के केस में. सो अब मेरे पास इनिशियल स्टेट तो आ गया. सो नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दैट बाय अ केक, इट मींस व्हाट? इट मींस व्हाट? योर स्टेट हैज बीन लाइक व्हाट? अ 9. स्टेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 हो जाएगा. तो लेट मी चेक. यस, व्हेन यू क्लिक ऑन इनसाइड दिस बाय अ केक,
when you click on it, it returns you a what? It returns you a what? A next state. It means initially it is 10, now it is what? A 9. So when I click on again on it, then cake count is what? A 8. So you can simply map this data. You can simply map this data to that. So what you have to do, if you have to write a JavaScript inside a JSX, then you have to use these two curly braces. So now when you see here, it is what? A 8. Now when you click inside it, it is reduces to what? A number of 7. समझ पा रहे हो सब? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So अब हम समझते हैं एक स्टेट तो हमने अभी तो क्या है, आपके पास एक सिंगल स्टेट है, राइट? अब यहां पे हमें दूसरा केस क्या है? आइसक्रीम का. ओके. So what we are going to do, we are going to make another action creators. बना हुआ है हमारे पास आइसक्रीम के भी एक्शन क्रिएटर्स एक्शंस बने हुए हैं. It returns an action and inside our action type we have a buy ice cream action. So now what we are going to do, we are going to create what? Another reducer. So this is what? Ice cream reducer dot js. And now I'm going to copy the whole things. ठीक है. अब देखो कितना मजा आएगा. अब इनिशियल स्टेट में मैं यहाँ क्या चेंज कर दूं? Number of ice cream. नंबर ऑफ आइसक्रीम्स. अब देखो ये सारे आपके स्टोर में एक जगह स्टोर है. अब आप कितना इजीली इसको एक्सेस कर पाओगे देखना. नंबर ऑफ आइसक्रीम्स. एंड नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस टू नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, right? And you have to change this cake reducer to what? Ice cream reducer. ठीक है, बढ़िया है. अब ये आइसक्रीम रिड्यूसर में एक्सपोर्ट भी, सॉरी भैया पूरा कॉपी नहीं हो. ठीक है, आइसक्रीम रिड्यूसर हमारा एक्सपोर्ट हो गया. अब आपने 2 रिड्यूसर्स बना लिए हैं, बट आपकी स्टोर में क्या है? ऊपर बाय केक की जगह पे आइसक्रीम. Okay, sorry. So what you have to do here, you have to import buy ice cream from action types. And now this case should be changed to what? Buy ice cream. But a problem kya hai? Inside your store, there is only a cake reducer. There is only a cake reducer. But you have to pass the ice cream reducer as well inside the store. So how can you do that? So for this thing, we have a simply called a root reducer. So I'm going to make your store.js. ठीक है, मैं यहाँ बना लेता हूँ एक फाइल. और नहीं, इसको यहाँ नहीं बनाते हैं, इसको कहाँ बनाते हैं? रिड्यूसर के अंदर बनाते हैं. तो इसका नाम क्या रख देते हैं? बताओ. रूट रिड्यूसर. Sorry, root reducer dot js. So inside the root reducer, what you have to do, you have to import something called combine reducer from what? From Redux. And now you are going to import the both reducers. First is what? Cake reducer from what? From this cake reducer. And second is what? Import ice cream reducer from what? This ice cream reducer. And now you are going to combine both the reducer inside this root reducer. So what you have to do, you have to call this combine reducer, which is coming from a Redux package. So this combine reducer
and inside this combined reducer, you have to pass these two reducers. So first I'm going to give a cake. So cake reducer should be what? This reducer. आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ये ऑब्जेक्ट आपका नाम आप केक भी रख दो, ठीक है? तो मैं सिंपली केक ही रख देता हूँ. So cake is what? Cake reducer. And second key value is what? Ice cream. And ice cream is what? This ice cream reducer. Nice. And now we are going to export it. So export default what? Root reducer. Nice. So we have made a root reducer. So now inside the store, so I'm going to remove this cake reducer and I'm going to import what? Root reducer. Root. So inside the root reducer, all the reducers are present. So import root reducer from what? No, double this reducers and inside this root reducer. Nice. So I'm going to pass a root reducer instead of passing this cake reducer. So now it works as expected. Okay, so for checking this thing, what we have to do? We have to import this use dispatch and use selector inside what? Inside a ice cream. Inside a what? Ice cream container. So if this is S2, the number of ice creams, and second is what? A button which reduces, it's dispatching an action. So buy a ice cream. Ice cream. Okay. So what we have to do here? Firstly, you have to dispatch an action. So const dispatch is equals to what? This use dispatch. And second is what? Const cake is equals to what? This use selector, and it takes what? It takes a state as an argument and return what? State dot. अब देखो, अब आपको कौन सा चाहिए? आपको आइसक्रीम चाहिए. आइसक्रीम चाहिए ना? आपके पास क्या क्या है? कौन कौन सा स्टेट है? देखो, जब ये केक रिड्यूसर के पास जाएगा तो इसको इनिशियल स्टेट क्या मिलेगा? केक मिलेगा. आइसक्रीम वाले के पास क्या मिलेगा? आइसक्रीम रिड्यूसर के पास क्या है? इनिशियल स्टेट. तो अब तुम्हारे रूट रिड्यूसर के पास क्या हो गया? एक स्टेट है, और स्टेट में क्या है? स्टेट डॉट केक और स्टेट डॉट व्हाट आइसक्रीम. यही है ना? क्योंकि मैंने जो रिड्यूसर रिटर्न कर रहा है, जो स्टेट मैंने आइसक्रीम में रखा हुआ है. तो अब मैं क्या करता हूं? इस कंपोनेंट पे जाता हूं, आइसक्रीम रिड्यूसर पे, और कहाँ है आइसक्रीम कंटेनर? दिस इज आवर स्टेट डॉट. देखो ये सजेस्ट भी करता है, आई थिंक आइसक्रीम. ठीक है, ठीक है. केक में क्या था? स्टेट डॉट नंबर ऑफ केक्स. और आई थिंक मे बी, चलो देखते हैं. कंसोल डॉट लॉग. एरर आएगा, डेफिनेटली आएगा, मुझे पता है कहाँ से आएगा. एक काउंट, एंड नाउ व्हाट यू आर वांट टू डू? अ केक काउंट. तो अभी देखते हैं इनिशियली वो हम गेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. लेट मी चेक. Was not found in Redux. So combined reducers is not found in Redux. तो क्या ये React Redux का पैकेज है? देखते हैं. Yes, नहीं. Possibly provider. Batch connect. Use selector, use store. Combined reducer is not a part of Redux. How can it? अच्छा. कंबाइन रिड्यूसर. ओके. कंबाइन नहीं यार. हाँ यार, कंबाइन रिड्यूसर्स होगा आई थिंक. यस, मे बी. देखते हैं.
ओके, सो कंबाइन रिड्यूसर्स नेग्लेक्ट नहीं किया, रिड्यूसर्स कंबाइन रिडक्स से तो नहीं होता है, रिडक्स में है क्या, रिडक्स में ही तो लगाए थे, अच्छा हाँ चल गया, रिड्यूसर्स होता है, रिड्यूसर नहीं होता है, रिड्यूसर्स होता है, राइट। सो नाउ यू हैव टू थिंग्स, ओके, नंबर ऑफ केक काउंट में भी नंबर ऑफ आइसक्रीम्स आ रहा है और इसमें भी नंबर ऑफ आइसक्रीम्स आ रहा है, बिकॉज केक्स अनडिफाइंड आ रहा है, यस वाई, ओके मैंने कुछ गलत किया ना, यस मैंने यहाँ पे केक कंटेनर के अंदर, जो मैंने यहाँ केक तो मुझे नहीं चाहिए था ना, नहीं मुझे क्या चाहिए था, केक कंटेनर, आइसक्रीम कंटेनर के अंदर मैंने केक काउंट लिखा है, दैट्स वाई इट प्रिंट्स यू व्हाट, भाई देख भी नहीं रहे हो सब क्या यार, बताना चाहिए ना, सर देख रहे हैं। सर देख रहे तो हैं देख रहे हैं। ये गलत, ये बताना चाहिए था कि भैया आइसक्रीम के अंदर केक क्यों ला रहे हो, ठीक है चलो ला भी सकते हो, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप मैं गेट करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो अब ये मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको आइसक्रीम काउंट्स, ठीक है। तो अब देखोगे तो केक काउंट के अंदर भी आ रहा है नंबर ऑफ आइसक्रीम्स और आइसक्रीम काउंट के अंदर भी नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, तो ये तो सही है, बट केक के अंदर प्रॉब्लम है, बिकॉज स्टेट डॉट नंबर ऑफ केक्स नहीं मिल रहा होगा इसको, यहाँ पे अब इसको क्या मिलना चाहिए, केक मिलना चाहिए। तो मैं जाता हूँ इसमें केक कंटेनर में और देखता हूँ केक्स पे, आई थिंक इट शुड बी गेट, ओके भैया क्या फट गया, ऑब्जेक्ट्स नहीं, केक रिड्यूसर नंबर ऑफ केक्स, अच्छा 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 अच्छा, आइसक्रीम रिड्यूसर्स नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, तो मैं क्या करता हूँ आइसक्रीम कंटेनर में मैं आइसक्रीम नंबर ऑफ आइसक्रीम्स केक में इनकी स्टेट को डाल दूँ तो भी काम करेगा, बिल्कुल करना चाहिए बट कर नहीं रहा है। अच्छा मैंने कुछ आइसक्रीम काउंट्स केक्स अनडिफाइंड, ओके नंबर ऑफ आइसक्रीम्स एट गेट, ओके केक्स नहीं मिल रहा है इसको, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स नहीं मिल रहा है, गिव मी अ सेकंड, नंबर ऑफ केक्स, बस मेरा दिमाग भी थोड़ा कम काम कर रहा है यार, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स एंड नंबर ऑफ केक्स दोनों डिफाइंड हो गया, तो मैं केक्स में एक मिनट यार, रोड लोजर के पास क्या है, केक है, स्टेट डॉट केक, केक्स ठीक है, अब यार कुछ ना, और यहाँ पे आइसक्रीम तो चलना चाहिए, व्हाट हैपेंस, नंबर ऑफ केक्स तो उसको मिल रहा है बट आइसक्रीम नहीं मिल रहा है, केक्स मिल रहा है नंबर ऑफ केक्स ठीक है, आइसक्रीम क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज यूज सेलेक्टर, ठीक है स्टेट डॉट आइसक्रीम मैंने लिया, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे रिड्यूसर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो रिड्यूसर के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बाय आइसक्रीम, बाय आइसक्रीम स्टेट डॉट All right, everyone. डिस्पैच In तो this video, ठीक है, let's learn about the use selector hook. What I'm going to अरे do भैया is, ये कौन है, as it is, दास ठीक है यार थोड़ा देख लो भाई इधर, ठीक है यार कुछ video, केक्स, let's learn about the use dispatch. यार म्यूट कर लो जो भी हो, नंबर ऑफ केक्स, ओके आइसक्रीम आइसक्रीम, अच्छा यहाँ स्टेट डॉट आइसक्रीम, ठीक है मुझे रूट रिड्यूसर्स में जा पा रहा है, आइसक्रीम में हाँ बिल्कुल जा पा रहे हैं, केक पे ओके, give me a second, केक रिड्यूसर आइसक्रीम रिड्यूसर
ठीक है, चाइल्ड इशू क्या है? स्टेट कंबाइन रिड्यूसर हमारा काम नहीं कर रहा है क्या? मैं एक बार ना इसको करके चेंज करके देखता हूँ, आइसक्रीम को ऊपर रखता हूँ, पता चलेगा कि कहीं कंबाइन रिड्यूसर तो काम तो नहीं है। सॉरी, दोनों में प्रॉब्लम है क्या? आ तो रहा है, बट प्रॉब्लम आइसक्रीम डिस्पैच में हटाता हूँ थोड़े टाइम के लिए, सकता है डिस्पैच प्रॉब्लम कर रहा हूँ। देखो डेटा तो गेट कर रहा है, आइसक्रीम काउंट्स भी आ रहा है, केक्स भी आ रहा है, बट नंबर, इफ यू रेंडर नंबर ऑफ केक्स, अनकॉट एरर है इस लाइन पे। रिडक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ केक्स में कोई इशू है। तो नंबर ऑफ केक्स, कहीं मैंने कुछ डिफाइन किया है क्या? नंबर ऑफ केक्स कंसोल किया है क्या? फॉर नंबर ऑफ केक्स कहीं ना कहीं तो यूज हुआ है यार ये। नंबर ऑफ केक्स, नंबर ऑफ केक्स H2 H2 यार, where is this H2 cakes handle dispatch by a cake, ये भी H2 है। आइसक्रीम कंटेनर H2, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, चलो मैं ना सेलेक्टर को कभी के लिए हटा देता हूँ और इसके भी सेलेक्टर को हटा देता हूँ और देखता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मतलब सेलेक्टर में इशू है। अब मैं इसके सेलेक्टर को रहने देता हूँ, इसके सेलेक्टर में प्रॉब्लम है। स्टेट डॉट केक्स, स्टेट डॉट, अच्छा, अरे यार कितना बेवकूफ हूं मैं भाई। यहाँ मिल रहा है केक्स और केक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट है नंबर ऑफ केक्स। केक्स के अंदर क्या है? नंबर ऑफ केक्स है। और मैं यहाँ मैप क्या कर रहा हूँ? पूरे ऑब्जेक्ट को मैप कर रहा हूँ H2 पे। मैप होगा क्या? नहीं होगा ना, नंबर ऑफ केक्स पे आएगा ना डेटा। समझ पा रहे हो सब क्या गलती थी? यस सर। गलती समझ पा रहे हो? यस सर। मैंने केक क्या था? एक ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली मैप कर रहा था किस पे? H2 पे। क्या ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मैप नहीं होगा ना? तो केक्स के अंदर क्या था? नंबर ऑफ केक्स का स्टेट था। समझ पा रहे हो? स्टेट डॉट केक कहाँ गया? अब ये समझना, पहले मैं कैसे डेटा लेके आ रहा हूँ। यूथ सेलेक्टर के पास गया, बोला भैया तुम्हारे पास ना ग्लोबल स्टेट है। ग्लोबल स्टेट मीन्स तुम्हारे पास क्या है? स्टोर है। अब मुझे क्या चाहिए? तुम्हारे स्टोर में से जो स्टेट है, ये ओवरऑल जो स्टेट है आपके पास, उस स्टेट से मुझे क्या चाहिए? केक चाहिए। तो ये सेलेक्टर किसके पास गया होगा? रूट रिड्यूसर के पास, और बोला होगा कि भैया मुझे स्टेट चाहिए। तो स्टेट डॉट केक पे क्या मिला होगा इसको? स्टेट डॉट केक पे क्या मिला होगा? क्या मिला होगा स्टेट डॉट केक पे? बताओ। ये केक रिड्यूसर का स्टेट, मतलब स्टेट डॉट केक पे ये रिटर्न हुआ होगा तुम्हें। अब तुम्हें स्टेट डॉट केक डॉट नंबर ऑफ केक्स तो मिलेगा ना। केक पे तो ये पूरा रिड्यूसर रिटर्न हुआ होगा, बट तुम्हें अगर ये स्टेट चाहिए होगा तो क्या करना होगा? स्टेट डॉट दिस रूट रिड्यूसर का केक डॉट व्हाट दिस समथिंग लाइक, सॉरी क्या कहां चला गया? रूट रिड्यूसर है, ये केक रिड्यूसर है। स्टेट डॉट केक डॉट नंबर ऑफ केक्स। सिमिलरली यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा?
क्या करोगे, दिस आइसक्रीम काउंट, बताओ क्या होगा, डॉट व्हाट, आइसक्रीम काउंट डॉट व्हाट, दिस नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। सो देखो यही होता है, करोगे प्रॉब्लम्स आते हैं यार, मुझे भी अभी भी आते हैं यार, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, बट हो गया। अब देखो, अब मैं बाय अ क्लिक पे क्लिक करूंगा, मैं स्टेट जब बाय अ क्लिक पे करूंगा तो ओके, अच्छा राइट, तो केक्स का काउंट कितना हो गया, 9, केक्स का काउंट क्या है, 9 है, बट मैं जब बाई आइसक्रीम पे करूंगा, अब देखना, अच्छा बाई आइसक्रीम से मैंने एक्शन डिस्पैच नहीं करा है और मैंने एक गलत जगह पे मैप करा हुआ है, तो मुझे ये मैप कहाँ करना था, यहाँ, और यहाँ मुझे क्या करना है, बाई अ आइसक्रीम, ठीक है। नाउ मैं ऑन क्लिक लगाता हूं और ऑन क्लिक पे क्या करेंगे, हैंडल दिस पैच बना लेते हैं, और यहां से मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन कॉल कर दूंगा, कॉन्स्ट हैंडल dispatch is equals to this arrow function, and inside this arrow function I'm going to dispatch an action. Before dispatching you have to use this dispatch here, and now what, const dispatch is equals to use dispatch, and yeah, now अब आप क्या करोगे, डिस्पैच क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट व्हाट, बाई आइसक्रीम फ्रॉम व्हाट, दिस redux, and inside this redux this action types से मिलेगा कि कहां से मिलेगा, एक्शन क्रिएटर से मिलेगा ना, तो मैं जाता हूँ एक्शन क्रिएटर के पास, and inside this action creator what we have, ice cream actions, yeah, now it is okay। तो अब आइसक्रीम के पास आते हो, बाय आइसक्रीम, अब आप सिंपली क्या करोगे, इसको यहां से डिस्पैच कर दोगे, बढ़िया। अब देखते हैं ऑन क्लिक, अच्छा एक छोटा सा इशू आ गया, आइसक्रीम के अंदर मैंने ऑन क्लिक का एल कैपिटल रखा हुआ है, I have to change it, now it is okay, and now when I click on a buy a cake it is 9, when I click on ice cream it is 9, when I click on a cake it is 8। अब देख रहे हो स्टेट कैसे हैंडल हो रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को, यस सर। Yes, sir. तो आप अब क्या कर सकते हो, ग्लोबल स्टेट हैंडल कर सकते हो। अब देखो, अब इसका बेनिफिट क्या है ना भाई, कि अगर मान लो, अरे कौन है यार, चलो ठीक है, अब क्या करना है ना, कि अब आपको चाहिए आइसक्रीम का स्टेट चाहिए किसी दूसरे कंपोनेंट पे, मान लो कि आपको यूजर वाले कंपोनेंट पे स्टेट चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपल जाओगे उस यूजर पे, ये कॉपी करोगे और सिंपल जाओगे यूजर वाले में, यूजर कंपोनेंट में, अगर आपको ये यहाँ चाहिए होगा, आप क्या करोगे, सिंपली यूज सेलेक्टर से क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो, तो यू कैन लाइक सिंपली इंपोर्ट दिस, एंड नाउ अब ये स्टेट आइसक्रीम वाला यहां भी क्या है, क्या है, अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे सिंपली आइसक्रीम काउंट अगर आपको यहां चाहिए होगा तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो ना, दैट इज द पावर ऑफ व्हाट, रिडक्स, दैट इज द पावर ऑफ व्हाट, रिडक्स। अब तुम देखो, अब यहां तुम देखोगे, अरे यार, तो यहाँ भी वही गलती कर दिया मैंने, क्या कर दिया, ये नंबर ऑफ आइसक्रीम्स होगा, अब देखोगे तो यस आ रहा है ना यहाँ से आइसक्रीम काउंट, फाइन, इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम है भाई, बताओ सब। नो सर। नो सर। स्टेट हैंडल करना
तो ये कितना इजी हो गया। तो दैट इज दी लाइक कि अब क्या है ना कि किसी भी कंपोनेंट पे कोई अगर जो स्टोर में डेटा पड़ा है ना, डायरेक्टली आप यूज सेलेक्टर से क्या कर सकते हो, उस रिड्यूसर की नेम से डायरेक्टली आप डेटा गेट कर सकते हो और फिर जो भी उसके अंदर होगा आप यूज कर सकते हो, है ना? क्लियर है ना? तो Yes, sir. दैट इज द पावर ऑफ रिडक्स कि अगर मुझे इन केस मुझे आइसक्रीम से ये आइसक्रीम काउंट भेजना होता किसको, इस यूजर कंटेनर को, तो स्टोर नहीं होता तो क्या करते तुम, पहले इस डेटा को कहां भेजते तुम, कहां भेजते, app.js के पास भेजते ना? क्योंकि भैया आपके पास ये है, डायरेक्टली तो आप आइसक्रीम से यूजर को भेज नहीं सकते हो ना डेटा, क्योंकि वो दोनों सेम लेवल पे है। यहां तो प्रॉप भी काम नहीं करेगा, करेगा प्रॉप काम? मेरे को कोई बताएगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि प्रॉप्स कब काम करता है, व्हेन यू हैव टू पास अ डेटा फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड कंपोनेंट, देन यू हैव टू पास अ प्रॉप्स, राइट? बट हियर इट इज अ प्रॉब्लम कि केक कंटेनर, आइसक्रीम कंटेनर एंड यूजर कंटेनर आर ऑन द सेम लेवल ऑफ द ट्री। अब सेम लेवल पे तो आप भेज नहीं सकते हो, तो सेम लेवल पे भेजने के लिए आपके पास अप्रोच क्या था कि पहले आप उसके पेरेंट को भेजो। इट मींस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ ट्री स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक रिएक्ट ट्री, अगर मैं इमेजेस खोलता हूं, अगर मैं यही खोलता हूं, चलो मान लो, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इस एफएस नोड से मुझे डेटा पॉपुलेट करना है इस एफएस नोड के पास, अगर आपके पास रिडक्स नहीं है, इफ यू हैव नो रिडक्स, देन व्हाट यू हैव टू डू, you can't pass data on the same level. Then what you have to do, you have to pass a data from this component to a parent component using what, using what, a Callback callback function. functions. Then this parent component passes a prop to this component. अब यहां भी फिजिबल है, चलो यहां भी मान लेते हैं सर कोई बात नहीं कर लेंगे, बट मान लो कि समथिंग लाइक अगर ये स्ट्रक्चर होता, ये स्ट्रक्चर है आपके कंपोनेंट्स ट्री का, पर इफ यू हैव टू पास अ डेटा फ्रॉम दिस बी कंपोनेंट टू दिस जे कंपोनेंट, देन हाउ कैन यू डू दैट? अब क्या करना पड़ता, बी से पहले किसको भेजना पड़ता, डी को, चाइल्ड टू पेरेंट मींस कॉल बैक फंक्शन, देन डी टू व्हाट, दिस ई टू व्हाट, e to what, this O. O, and this O passes a prop to this and passes a prop to this m passes this prop to what, this J component. तो कितना कॉम्प्लेक्स हियरकी हो जाता। अब आपके पास स्टोर है, तो व्हाट यू हैव टू सिंपली डू, आप स्टोर में डेटा सेव किए, यूज सेलेक्टर के पास गए, अगर जे को भी चाहिए वो जाएगा, बोलेगा भैया मुझे जैसे कंपोनेंट यहाँ उठाया है आइसक्रीम, स्टेट स्टेट डॉट वो रिड्यूसर का नेम, और उस रिड्यूसर से जो भी उसका इनिशियल स्टेट होगा वो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। तो ये कितना सिंपल हो गया। तो दैट इज द पावर ऑफ रिडक्स। और कभी भी किसी लाइव प्रोजेक्ट में विदाउट रिडक्स यू कांट हैंडल एनीथिंग, because there are a lot of state, you have a lot of components which you have to handle, so it is not possible to handle all these states with a callback function or a prop. So you have a state to handle all the things. Is it clear? Yes, sir. Nice. So that's all for the redux. हम अभी मैं बताऊंगा, बट अभी क्योंकि सोने का टाइम है तो थोड़ा सा एक्साइटिंग बना देते हैं, 5-10 मिनट का एक ओवरव्यू दूंगा मैं, जो from next lecture we are going to start our project, or yes we are going to cover a lot of things on that project. So let's I'm going to discuss about it. So what we are going to cover in our project is that, give me a second. So I'm going to open my notepad. Now inside this notepad, okay, first thing I'm going to push our code. So my screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. यार टाइप भी नहीं हो रहा है ना, पावर से रो रहा है। ओके कोई बात नहीं।
तो WSL में चला के देखूं क्या चल रहा है, चल तो रहा है। गिट स्टेटस देगा क्या WSL? WSL इज लाइक ओके यस। तो वी हैव, ओ माय गॉड, इनिशियलाइजेशन नहीं है क्या इसमें? गिट का हमने तो करा था ये। अच्छा ये इनिशियलाइज नहीं हुआ है ना गाइस? तो इसके लिए मैं एक नया रेपो क्रिएट कर देता हूँ। ये मैं क्रिएट किया था कल क्या? नो सर। तो React GitHub, I'm going to open our GitHub में Redux cake. Okay, so I'm going to create one another repository name React Redux integration. I'm going to create a repository. Now what I have to do here, I have to initialize our git with a git init command, then git status, and now yes, I have all my files. So what we have to do, git add all. Now git status, all the things are green. Now git commit -m and React Redux implementation. Right. Okay. I think. Okay. So I have to set my git config user global username or WSL environment. So git config global user dot email, and email should be what? Anything. Which email ID I have used here? Okay, 1704. Others on day 1704@gmail. And now git config what? Name, and name should be others. And now git commit -m. Okay, first commit. Okay, now git status, yes. Now what we have to do, we have to set this remote origin. So this, okay, नहीं हुआ क्या? Yeah. Okay. Now git push origin master. I think username of GitHub. What? Others. देखो WSL कितना सिक्योर है अभी दिख रहा है गाइस? यस सर। यही आप पावरशेल यूज करते होगे तो आपको इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती है। WSL पे कितनी सिक्योरिटी मिल रही है? तो व्हाट इज दैट? ADA RSH पे टाइप नहीं होगा क्या? अच्छा पासवर्ड पूछ रहा है। सो व्हाट वी हैव टू यूज हियर, पासवर्ड के लिए भैया मैं पासवर्ड मुझे याद नहीं है। पासवर्ड के लिए मुझे फिर ऐप पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा यार। पासवर्ड मैंने क्रिएट किया था क्या ऐप पासवर्ड? ओके चलो मैं क्रिएट कर लेता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। पर्सनल एक्सेस टोकन, टोकन क्लासिक्स, जनरेट अ न्यू टोकन क्लासिक एंड नाउ ओके यहाँ मांग रहे हैं 1704 पे तो नहीं था यार। ओके मैं इसको डालता हूँ, देखता हूँ। ओके यार मैं पुश कर दूंगा कोड यार, ठीक है? ये WSL से काम नहीं कर रहा है, पावर सेल भी मेरा इधर चल ही नहीं रहा है। कोई नहीं, मैं पुश कर दूंगा कोड। ओके अब अपने नेक्स्ट चीज पे आते हैं। मैं पुश करके ना कोड ग्रुप में शेयर कर दूंगा लिंक, ठीक है? यस सर।
So now we are going to what we are going to cover in our major project is that e-commerce, where I have divided the e-commerce in different sections, something like there are around 10 to 15 sections where we are going to work on both as a front end on a back end. It means we are going to use a tech stack is what? Tech stack is React as a front end, as a back end, as a server. For a server, we are going to use a node, or you can say this is for back end. So we are using Express.js and Node.js as a server. So what as a front end, we are going to use a React. In a back end, we are going to use a Node.js. And for a database, we are going to use what? MongoDB. Is it clear? So जो बैकएंड है, अभी तक हमने कुछ स्टार्ट नहीं करा है, तो बैकएंड और MongoDB हम साथ साथ प्रोजेक्ट में ही सीखेंगे. इज इट क्लियर? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा कि लाइक देखो, अगर मैं बैकएंड तुम्हें ऐसे सिखाऊंगा या MongoDB में ऐसे बोलूंगा तो इट नॉट मेक्स एनी सेंस. समझ रहे हो ना? क्योंकि क्वेरी जब तक क्वेरी करके देखोगे नहीं, क्वेरी करके नहीं देखोगे तब तक तो फिर समझ में नहीं आएगा ना. तो क्वेरी करने के लिए आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ऐसे तो करोगे नहीं, है ना? So we are going to use a Node.js as a backend. हम सीखेंगे स्क्रैच से, सीखेंगे बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे. MongoDB भी हम बिल्कुल स्क्रैच से देखेंगे. React की हमें थोड़ी बहुत समझ आ गई है. So for React we are going to using React, Redux, and what for UI designing I am going to use what? Material UI. Is it clear? Okay. So talking about section division, so I'm going to like divide some sections. So first sections would be what? Node project set. It means I'm going to, इसके अंदर कुछ बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे, समथिंग लाइक कि नोड के अंदर आपको प्रोजेक्ट सेटअप करना है. मींस आप एक बैकएंड सेटअप बनाओगे जहां पे आप प्रोजेक्ट सेटअप करोगे नोड से यूजिंग Node.js, and you are going to install different packages like Express.js and all for what? For a boilerplate for a node server. जैसे आपने React के लिए आपका सर्वर आपने क्या किया? npm create React टाइप करा तो एक बन के आया ना प्रोजेक्ट सेटअप के लिए. तो वैसे हम सेटअप करेंगे नोड का सर्वर सेटअप करेंगे. Then after in section 2 we are going to learn about Express server. Means Express is what? A Node.js library which are going to use for building APIs. Is it clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Now, inside the section 3, we are going to use Node.js and we are going to build user sign up, sign in APIs. Clear है? ये हम बैकएंड में सीखेंगे. तो दिस इज फॉर बैकएंड. भैया म्यूट कर लो. सेक्शन 4 में आफ्टर दैट जब हमारा साइन अप हो जाएगा तो अब साइन अप एपीआई जो बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे रिएक्ट में उस एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे. तो इन रिएक्ट वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट व्हाट वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस एपीआईज. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एपीआईज इंटीग्रेट करेंगे. इट मींस जहां तक हम लॉगिन सिस्टम और साइन अप सिस्टम की पूरी फंक्शनैलिटी बिल्ड करेंगे कि हाउ कैन यू मेक अ यूजर लॉग इन यूजिंग बैकएंड. अब मैं जहां बैकएंड की बात करूंगा ना, वहां अंडरस्टैंड कर लेना कि MongoDB साथ में है, क्योंकि भैया बैकएंड कैसे कनेक्ट होता है? डेटाबेस से. तो यू लाइक जब हम कोई साइन अप एपीआई बनाएंगे तो हम कहां सेव करेंगे उस डेटा को? MongoDB के अंदर, डेटाबेस के अंदर. सो हम MongoDB साथ साथ समझ रहे होंगे कि MongoDB कैसे यूज करना है. तो इसके लिए MongoDB के लिए फिर कनेक्शंस पढ़ना होगा सेक्शन 3 में. देखो अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना? तो डीप में आगे की बात है कि फिर MongoDB कैसे कनेक्ट होता है बैकएंड के साथ. तो पहले सर्वर क्रिएट करोगे, फिर MongoDB कनेक्ट करोगे, फिर साइन अप साइन इन एपीआईज बनाओगे, फिर इंटीग्रेट करोगे इस एपीआईज को. देन आफ्टर इन सेक्शन 5 वी आर गोइंग टू मेक सम, क्योंकि हम ई कॉमर्स बना रहे हैं तो हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे ना, तो प्रोडक्ट और कैटेगरी के एपीआई बनाओगे.
अब जाते हो तो देखते हो ना कि भैया बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं ना ई कॉमर्स पे, कि व्हाट यू वांट, लाइक यू वांट क्लॉथ्स, यू वांट एक्सेसरीज एंड समथिंग लाइक दैट। तो डिफरेंट कैटेगरीज होंगी, तो उसके लिए हम अपनी एपीआईज क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट की एपीआईज बनाएंगे, क्योंकि और ये बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट होने वाला है यार, इसके अंदर सब कुछ सीखने वाले होंगे तुम लोग, बहुत कुछ सीखोगे। तो इट मे टेक सम टाइम, और वी हैव टू एब्स्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम और डिफरेंट लाइक डिफरेंट सेक्शंस। देखो दिस इज अ फिजिबल वे, बिकॉज क्या है कि हो सकता है इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा तुम लोगों को भी समझने में और मुझे भी कराने में, बिकॉज डेफिनेटली समझाना इट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि अगर आप खुद कर रहे होते हो तो आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, है ना, बट किसी को समझाना इज लाइक अ टिपिकल थिंग। तो डेफिनेटली, बट एट द एंड तुम्हें उससे ज्यादा कुछ नहीं समझ में, उससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। एज अ लाइक तुम्हारे पास एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट तुम्हारी अपनी रिज्यूमे पे होगा, तुम्हारे सीवी पे होगा, और उस प्रोजेक्ट के बिहाफ पे तुम 10 प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उस प्रोजेक्ट में मैक्सिमम चीजें कवर्ड होंगी। क्लियर है? यस सर। तो मतलब इस लाइक अभी देखो मेरे पास बहुत सारा कोड बेस है, मुझे भी इश्यूज आते हैं, तो इट इज नॉट लाइक कि मैं डायरेक्टली एकदम से सारे इश्यूज मेरे को समझ में आ जाते हैं, मैं सॉल्व कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। बट बहुत सारी चीजें होती है जो मेरे पास पहले से बनी हुई है, तो मैं वहां से जाके आइडिया ले लेता हूँ कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकता है, समझ रहे हो? तो दैट इज द थिंग। ओके, सो दी सेक्शन 6 in which we are going to cover, we are going to build React pages and what different layouts। लेआउट डिजाइनिंग करोगे ना, इट मींस यहाँ पे आपके पास थीम इंटीग्रेशन भी आएगा। थीम इंटीग्रेट करोगे कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट थीम। तो अब इससे ना देखो, चलो पहले बता ही देता हूँ। देन आफ्टर यू आर गोइंग टू व्हाट यूज व्हाट रिएक्ट इंटीग्रेशन आपने कर लिया, उसके बाद वी आर गोइंग टू मेक अ प्राइवेट एंड पब्लिक route, it means and going to design admin dashboard। अब एक बात बताओ, राउट्स पे आप डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हो, है ना, बट जहां लॉगिन करने के बाद वाली जो पेजेस होते हैं, क्या आप उस पेज की यूआरएल को डायरेक्टली हिट करते हो तो विदाउट लॉगिन क्या वो एक्सेस होने देता है पेजेस को? नहीं। नहीं होने देता है। वाई? बिकॉज आप लॉग्ड इन नहीं हो। तो जब हम लॉगिन बनाएंगे तो उसके साथ साथ हम राउटिंग भी हैंडल करेंगे, प्राइवेट राउट और पब्लिक राउट, और बहुत बड़ा डिजाइन तो नहीं बनाएंगे एडमिन का, बट यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हमें कौन सी यूआरएल को क्या करना है, पब्लिक रखना है, कौन सी यूआरएल को प्राइवेट रखना है। तो इट मीन्स व्हाट कि जो यूजर साइन इन का पेज होगा वो तो पब्लिक राउट होगा, वो तो कोई भी खोल सकता है, बट साइन इन के बाद जो राउट्स बनेंगे क्या वो आप खोल सकते हो? नहीं खोल सकते हो विदाउट नो सर, लॉग्ड इन। पासवर्ड। So we are going to cover like private and public route. It is also very important. तो बहुत सारे concepts हैं. Then after we are going to use like you are going to integrate what this product APIs, category APIs, categories APIs. Right. फ्रीज हो गई है। अरे स्क्रीन फ्रीज हो गया है। Now it is visible. नो सर। नो सर। यस सर, नाउ इट इज विजिबल। Okay. Search API. Apart from that, the different filters APIs हैं, वो सारे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, नहीं फ्रंट एंड पे कि प्रोडक्ट की एपीआई, प्रोडक्ट कहाँ से लाना है, कैटेगरी, ये सब कहाँ होगा तुम्हारे पास, डेटाबेस में होगा। तो डायरेक्टली हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करेंगे, वो बैकएंड के पास रिक्वेस्ट जाएगा, एंड बैकएंड मेक अ क्वेरी रिक्वेस्ट टू व्हाट योर डेटाबेस। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। देन आफ्टर वी हैव अ डिफरेंट सेक्शन। अब ई कॉमर्स में क्या होता है, इसके बाद तुमने प्रोडक्ट लगा दिया, रिएक्ट पेजेस बना लिया, सब कुछ बना लिया। अब क्या होता है, हमारे पास कार्ड सिस्टम होता है। सर कार्ड, या वही मैं बोल रहा था, कार्ड इंटीग्रेशन। तो आप बोल सकते हो कि कार्ड इंटीग्रेशन, या आप ऐसे बोलो ना कार्ड, हाँ चलो, इंटीग्रेशन एंड
हैंडल इट विथ कार्ट को हम हैंडल करते हैं। अगर आप ई कॉमर्स देखोगे तो हम लोकल स्टोरेज से हैंडल करते हैं। किसी को पता है लोकल स्टोरेज क्या होता है? सो बेसिकली लोकल स्टोरेज क्या होता है ना कि आपके ब्राउजर में जब जाओगे ना, आप किसी भी ब्राउजर पे इंस्पेक्ट करोगे तो यू सी लाइक यू हैव सम कॉल्ड एप्लीकेशन, एंड व्हेन यू गो इनसाइड दिस एप्लीकेशन सेक्शन you have something what this local storage, this session storage, this cookies, दिख रहा है? यस सर। तो जब तुम लॉगिन कराते हो ना, कभी भी तुम देखोगे लॉगिन होगा किसी भी वेबसाइट पे, अगर लॉगिन करोगे तो जब तुम जाके चेक करोगे तो वो लॉगिन में जो टोकन मिलता है ना, ये लोकल स्टोरेज में जाके सेव हो गया होता है। समझ पा रहे हो? दैट्स वाई तुम्हारे पास कभी कभी तुम लॉगिन करके 5 दिन बाद भी आओगे तो वो लॉग्ड इन रहता है। रीजन वाई कि वो जो तुम्हारा डेटा है ना वो कहाँ सेव है? लॉक स्टोर, तुम्हारे लोकल स्टोर। अगर वो लोकल स्टोरेज में सेव नहीं है, तुम यहाँ से उड़ा दो, तुम 2 सेकंड के अंदर वापस आ जाओगे साइन इन पेज पे। तो वो देखो यहाँ कस्टमर टोकन है, दिख रहा है? ऐसे टोकन्स क्या होते हैं? सेव रहते हैं। तो जब हम साइन इन बनाएंगे, साइन अप बनाएंगे, तो उस टोकन को हम कहाँ सेव कर रहे होंगे? लोकल स्टोरेज में। सिमिलरली व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, तो वो ऐड टू कार्ट का जो भी डेटा होगा वो हम कहाँ सेव करेंगे? तुम्हारे लोकल स्टोरेज में। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। देन आफ्टर इन सेक्शन 10 तो कार्ट हो गया। उसके बाद वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट अ पेमेंट। दिस इज अ मोस्ट important or a most complex or a most critical, but we are going to handle it in very simple way. So we are going to integrate what? Payment gateway integration. ठीक है? पेमेंट गेटवे आप इंटीग्रेट करोगे, और यहाँ पे आपको मैं क्रेडिट कार्ड से भी ऐड करना सिखाऊंगा कि हाउ कैन यू हैंडल योर क्रेडिट कार्ड, योर पेपल अकाउंट। पेपल जानते हो ना? यस सर। यस सर। और लाइक अब अपने स्टोर बना के ना ये करने लग रहा, सब तुम लोग आपस में बेचने लग रहा अपने नोट्स को। भैया पेपल करो, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो, फिर हम नोट शेयर करेंगे, राइट? आप लोग उनका पेमेंट गेटवे बनाओगे, क्रेडिट कार्ड, और इसमें हम डमी यूज करेंगे। भैया आप लोग जो क्रेडिट कार्ड आप लोग अपना दे सकते हो तो डेफिनेटली दे देना, अदरवाइज हम लोग डमी क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे डेटा। बट इट इज ऑल्सो लाइक सेम, बस वहां पे वो चेंजेस हो जाते हैं तुम्हारे क्रेडेंशियल्स। ठीक है? बाकी सबको सेम होगा अगर तुम लाइव में भी काम करोगे। देन आफ्टर व्हाट वी हैव ऑर्डर्स। पेमेंट तो कर दिया, ऑर्डर्स बनाओगे ना? विदाउट ऑर्डर्स हो पाएगा? यस सर। तो वी हैव सम ऑर्डर्स व्हिच वी आर गोइंग टू हैंडल, एंड आफ्टर दैट वी हैव, क्या होता है ई कॉमर्स में? ऑर्डर्स भी तुम हैंडल कर लिए। रिव्यू। भैया क्या चाहते हो? फ्लिपकार्ट ही बना दे? ऑर्डर से मेल ओके, शिपिंग। सर ऑर्डर का स्टेटस भी तो होना चाहिए। तो भैया ऑर्डर तो शिप करोगे भाई, अब स्टेटस के लिए तुम्हें अपने लिए ना वो रखना होगा, ई कार्ट वाले को हैंडल करवाना पड़ेगा। अपने ई कार्ट को बुलाओ कि भैया वो स्टेटस अपडेट करेगा। तो यस, लाइक यार मतलब जो फिजिकल चीजें हैं जितना कर सकते हैं यार, जितना हो सकता है उतना तो डेफिनेटली करेंगे। तो शिपिंग योर ऑर्डर, मतलब तुम्हारी ऑर्डर जब प्लेस हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, तो तुम्हारे ऑर्डर को शिप करा देंगे यार। तो ये भी तो हो गया ना, तुम्हारा ट्रैकिंग तो हो गया शिप। अब भाई तुम वर्चुअल चीजों को शिप करोगे तो वर्चुअल ही रिजल्ट आएगा ना। समझ Yes, मेरी बात को? तो मैं शिप करना दिखा दूंगा, उसके अंदर ट्रैकिंग है वो आप लोग मतलब ओरिजिनल शिपिंग करोगे तभी ट्रैक कर पाओगे ना चीजों को कि वो चीजें कहाँ पहुंची हैं। ठीक है? तो शिपिंग मैं डेफिनेटली कर दूंगा। उसके बाद वी आर गोइंग टू हैंडल यूजर प्रोफाइल। उसका प्रोफाइल होता है ना, उस प्रोफाइल में उसके ऑर्डर्स दिखते हैं, उसके एक्सवाइजेड मतलब जो भी उनकी क्रेडेंशियल्स वो दिखते हैं, डिटेल्स दिखते हैं। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू ऐड the orders and products handled by admin। अब मान लो कि कुछ ऑर्डर्स गया तो वो ऑर्डर्स लिसन भी तो कराओगे किसी एडमिन पैनल पे, कि जहां देख पाओगे कि भैया कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं, है ना? तो वी आर गोइंग टू हैंडल एडमिन पैनल। जो एडमिन पैनल हम डिजाइन करेंगे उसके अंदर आपके पास जो प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल, जो ऑर्डर्स हैं, वी आर गोइंग टू हैंडल दीज थिंग्स इनसाइड सेक्शन 14। इज इट क्लियर? यस सर। यस Then after we are going to
do our deployment. If you guys have some domain, then we आप बता सकते हो, मैं डोमेन भी फिल करके दे दूंगा. अदरवाइज इफ यू वांट सम लाइक CDN प्री SSL, देखो ये ऐसी चीजें है ना, ये आपको किसी भी आई डोंट थिंक कि कोई आपको CDN लगाना बताएगा या आपको कोई SSL, बिकॉज दीज आर दी थिंग्स जो कि इसके चार्जेस बहुत फ्री SSL लगाने के चार्जेस होते हैं लाइक 5,000, जो कि नॉर्मली मतलब छोटा काम है बट लेते हैं. बट दीज आर दी सम थिंग्स व्हिच आर यू आर गोइंग टू यूज इन लाइव प्रोजेक्ट. अगर ये चीजें तुम्हें पता है तो तुम भीड़ से अलग हो. भीड़ इन द सेंस कि तुम्हें बहुत कुछ आता है. इवन लाइक एक्सपीरियंस को भी, आई मीन बहुत एक्सपीरियंस होने के बाद भी बहुत लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता होती हैं. डिप्लॉयमेंट, डोमेन आप कैसे कनेक्ट करते हो, और ये सारी चीजें आपको, अगर आप इन केस फ्रीलांसिंग करते हो, इन केस इन फ्यूचर, तो इट हेल्प्स यू अ लॉट कि भैया आपको डिप्लॉयमेंट पे भी किसी पे टिकना नहीं पड़ेगा. अगर आपको कोई डोमेन लाइव करना पड़े तो वो भी आप कर सकते हो. CDN, देन आफ्टर SSL होता है जो कि आपकी वेब ट्रैकिंग होती है, तो फ्री SSL एंड ऑल. ये छोड़ो, छोड़ देता हूँ. CDN लगा देगा, CDN बता दूंगा, ठीक है. These are the sections which we are going to cover inside our e-commerce application. And what is our goal? To understand React, Redux, backend Node.js, Node Express, and what? MongoDB. So basically, you are going to prepare you as a Mon stack developer. So Mon means what? M for MongoDB, E for Express.js, R for React.js, and N for Node.js. So with this project, you have the lot of things like बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी. हाँ, परेशान नहीं होना है, कॉम्प्लेक्स होगा, धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, बट यस वी कैन हैंडल. और प्रैक्टिस करोगे तो इट इज जस्ट इजी फॉर यू. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जस्ट स्क्रैच फ्रॉम जस्ट स्टार्टिंग अ सिंपल पैकेज. तो हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे. आफ्टर दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू, लाइक जैसे अगर डिप्लॉयमेंट होता है तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स की. अब यहाँ डिप्लॉयमेंट तो मैं बता दूंगा, बट डिप्लॉयमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप बाद में सीख सकते हो, या इसके बाद आप मोन स्टैक बन जाओ तो फिर आप डिप्लॉयमेंट सीख सकते हो एंड ऑल. तो चलो, यही सारी चीजें हैं जो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट लेक्चर. डिप्लॉयमेंट के लिए होस्टिंगर से ले लेंगे डोमेन? नॉट नीडेड. डिप्लॉयमेंट के लिए देयर आर लॉट ऑफ वेज यार. मेरे को तो सबसे सही फायरबेस लगता है. फायरबेस. और आप होस्टिंगर यूज कर लो. आप क्या बोलते हैं, क्या होता है, हीरोकू यूज कर लो. आप बहुत सारी चीजें यूज करना चाहता हूँ मैं. फायरबेस और निखिल प्लीज म्यूट यार. तो फायरबेस के साथ क्या होता है ना कि आपको डोमेन भी आप बहुत इजीली लाइव कर देते हो. उसके साथ बहुत सारे क्लाउड फंक्शंस आते हैं जो कि डायरेक्टली आप स्टोरेज भी बना सकते हो. मतलब मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जहाँ पे हमने बैकएंड के लिए फायरबेस यूज करा है. अगर जिसका बजट कम है, जिसके पास लाइक वो बैकएंड के पूरे कोड नहीं लिखवाना चाहता है, मतलब APIs नहीं बनाना चाहता है, तो सिंपली उसके लिए हम फायरबेस पे चीजों को लाइव करके दे देते हैं. तो फायरबेस भी आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है. और फायरबेस बोलता है कि भैया अगर आप मेरा स्टोरेज ज्यादा यूज करोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर आप नॉर्मल डमी प्रोजेक्ट्स के लिए कर रहे हो या नॉर्मल कर रहे हो तो आपको नहीं देना पड़ेगा. तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. उसके साथ बहुत सारे क्लाउड फंक्शंस आते हैं फायरबेस में. सो आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपके पास पे लॉगिन करने के लिए मतलब साइन अप करना पड़ेगा इस पे, जैसे हम लोग ने मतलब गिटहब पे वगैरह पे किया था. फायरबेस पे. अरे यार मैं दिखाता हूँ यार तुम्हें. हाँ देखो फायरबेस. सॉरी मैंने बहुत सारी चीजें इस पे होस्ट की हैं. अभी करंटली मैं डमी URL किसी पे बना के देता हूँ. अगर मुझे कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे काम करने होते हैं तो मैं डमी इसी पे बना के लाइव करके देता हूँ. इससे क्या होता है, लाइक अगर आप साइन इन की बात करूँ, देखो ये साइन इन है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. आप इस पे कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हो. अब मैंने लाइव भी करा हुआ है एक डोमेन. जस्ट गिव मी अ सेकंड. एंड करते हैं कॉल को यार, बहुत क्या. अगर आप देखोगे ना तो जैसे कोई भी खोल लो, पुश नोटिफिकेशन या ना लर्निंग डे वो,
तो इसके अंदर आप यहाँ डायरेक्टली इसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, आप एनालाइज कर सकते हो, रियल टाइम डेटा देख सकते हो, मतलब ये पूरा तुम्हारे डेटाबेस का काम भी कर देता है। होस्टिंग कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो आपके पास होस्टिंग भी मिल जाता है, क्लाउड फाइल स्टोर मिलता है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम मिल जाती है, आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मिल जाता है, टेस्टिंग मिल जाती है, क्लाउड मैसेजिंग मिल जाता है। क्लाउड मैसेजिंग मतलब अगर आप चैट पे रियल चैट बॉक्स बनाना चाहते हो, जैसे व्हाट्सएप होता है ना, चैटिंग सिस्टम बनाना चाहते हो तो क्लाउड Yes, sir. मैसेजिंग आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है यार ये। अपार्ट फ्रॉम दैट होस्टिंग भी है, तो होस्टिंग के लिए भी ये बहुत सारी चीजें इस पे होस्ट भी हैं। लाइक अगर आप वेब देखोगे, आप रजिस्टर करो, फायरबेस इंटीग्रेट करो, अपने में 3 कमांड चलाओ, फायरबेस इनिट, फायरबेस npm बिल्ड और फायरबेस डिप्लॉय, तुम्हारी प्रोजेक्ट डिप्लॉय भी हो जाएगी। तो बहुत सही है। चलो ठीक है गाइस, तो दैट्स ऑल, एंड फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। और यस, आई एम आल्सो एक्साइटेड, और आई होप सो कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। सर आपने Yes, sir. अटेंडेंस नहीं दी? या अटेंडेंस यार गाइस कर ले लूंगा मैं आज थोड़ा। Yes, sir. ओके सर, ओके सर, Okay, ओके sir. सर। चलो बाय बाय गाइस। Good night, sir. Good night. गुड नाइट सर। Good night. गुड नाइट सर। Good night, sir.